Good morning, students. So, yesterday we talked about the basic things of chapter 6. Those are the life processes. I told you when we say a living thing is there, that means it must show the molecular moments. And these molecular moments, they are required for maintaining the live processes. We talked about what is the meaning of live processes. In this chapter we'll be talking about 4 life processes, and the first life process, that is nutrition. Yesterday I told you that this nutrition is of two type. Some organism, they make their own food material using very simple substances from the environment, like non-organic substances. Some organism, they use non-organic substances from the environment. Which type of non-organic substances? Carbon dioxide, water. So those organisms which make use of non-organic substances from the environment, like carbon dioxide from the environment and water, and make their own food material, they are known as the autotrophs. So what are autotrophs? Autotrophs are the organisms which make their own food material using inorganic substances from the environment, like carbon dioxide and water. And in these autotrophs, the green plants are included and some bacteria. So autotrophs are green plants and some bacteria. Other type of nutrition, in which the organism take complex organic substances, not the inorganic, but complex organic substances. They take complex organic substances, and from these complex organic substances they maintain or they fulfill their food requirement. So these complex organic substances, the organism which make use of these complex organic substances, those organisms are known as heterotrophs. Now these heterotrophs, so these heterotrophs are the organisms which take complex organic substances, and these complex organic substances cannot be used by these heterotrophs unless these complex organic substances are converted into simple organic substances. So in heterotrophs, complex organic substances are used as a food material, but these complex organic substances cannot be used as a source of energy unless these complex organic substances, they are converted into simple organic substances. Now these complex organic substances are converted into simple organic substances with the help of certain enzymes, and these enzymes are also known as biocatalysts.
Why they are known as biocatalysts? Because these enzymes are present inside the body of a living organism. So in heterotrophic type of nutrition, the complex organic substances are converted into simple organic substances with the help of certain biocatalysts. And in this heterotrophic nutrition, all the animals plus fungi, animals and fungi, they are the examples of heterotrophs, whereas the green plants and some bacteria are the example of autotrophs. Now we'll be talking about in detail regarding autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Now these autotrophic nutrition, what happened, the inorganic substances like carbon dioxide plus water. This carbon dioxide is inorganic, water is also inorganic. So inorganic substances like carbon dioxide and water, these are taken from the environment, and with the help of sunlight, plus there is a pigment which is known as chlorophyll. So with the help of sunlight and chlorophyll, an organic substance is formed. So these are inorganic substances. In autotrophic nutrition, inorganic substances like carbon dioxide and water, that is taken in presence of sunlight and chlorophyll, organic substances, that is C6H12O6, and I think all of you must be knowing about what is it. It is glucose, and glucose is organic substance. Plus, in addition to this, the oxygen will be produced, plus water will be produced. So in autotrophic nutrition, inorganic substances like carbon dioxide and water, in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose is produced, oxygen is released, and the water is produced. Now this is a chemical equation. But this is not a balanced equation. To make it balance, now how to make the balance equation, you will be learning in chemistry. So 6 molecule of carbon dioxide, they react with 12 molecule of water to give rise to 1 molecule of glucose, plus 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. So now this is a balanced equation. This is what is photosynthesis. So if I say, during photosynthesis, inorganic substances are converted into organic substance, or I can also say that there is a reduction of carbon dioxide, because this carbon dioxide contains carbon and oxygen. Hydrogen is not there. If the hydrogen is added into any substance, we say the reduction. So this carbon dioxide get reduced or get fixed in a form of carbohydrates, and the oxygen which we find in the environment, and you know that this oxygen is very important, that is released during photosynthesis. अगर photosynthesis नहीं होता तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग कभी जीवित नहीं रह पाएंगे, right? So oxygen is released during photosynthesis, carbon dioxide is absorbed during photosynthesis. So if I say, what are the important events which takes place during photosynthesis? One is, there is an absorption of light energy. There is absorption of light energy by chlorophyll. So one event which takes place during photosynthesis is the absorption of light by the chlorophyll. Second event which takes place during photosynthesis
that is light energy. Light energy, we call that as light energy, as a solar energy also. Why? Because this light energy comes from the sun. We call that this energy as a radiant energy also. So during the photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. Chemical energy. Why? Because this light energy is converted into chemical energy. This is a chemical. Glucose is a chemical, and you know glucose के अंदर energy is there. तुमने बहुत बार टीवी में एडवर्टीजमेंट देखी होंगी कि तुम डी एनर्जाइज, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, तो यू टेक अ ग्लास ऑफ ग्लूकोज एंड इमीडिएट द एनर्जी will come. So that means the energy which is present inside the glucose is chemical energy. So second event during photosynthesis is conversion of light energy into chemical energy. Third event which takes place during photosynthesis is splitting of water. Splitting of water means the water जो है ये वाला, it gets split, ये divide हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. So during photosynthesis, water split into hydrogen and oxygen, and this oxygen is released. And hydrogen combined with the carbon to give rise to glucose. So third event is there. Fourth event is reduction of carbon dioxide. So these are the four events which takes place during the photosynthesis. One is absorption of light energy or absorption of solar energy, or you can say absorption of radiant energy by the chlorophyll. Second, the light energy, that is the solar energy, is converted into chemical energy because this glucose is formed which contains the chemical energy. Third is there is a splitting of water, that means there is a breaking of water, and when the water breaks, the hydrogen gets attached with the carbon dioxide. And the oxygen of water is released during the photosynthesis. So splitting of water takes place and there is a reduction of carbon dioxide. So there is a reduction of carbon dioxide. Okay, so these are the events. Now all these events, four events which I told you, these events may not take immediately one after the other. During the daytime, when the sunlight is there, all these events takes place. All these four events takes place which I told you. But there are certain plants. Which plants? Xerophytes. Now what are xerophytes? In higher class or even in 10th class, subsequently you will find xerophytes are the plants which are also known as desert plants. They are also known as desert plants. These are also known as desert plants. Now, these desert plant or the xerophytes, here all those four events does not take place continuously. What happened is during the daytime these xerophytes take up carbon dioxide. Daytime में ये carbon dioxide ले लेते हैं, and during the night time, it is not the daytime, during the night time they take the carbon dioxide from the environment. During the night time they take the carbon dioxide from the environment, and this carbon dioxide form a intermediate. Some intermediate complex is formed during the night time. So in desert plants, which are also known as xerophytes, the four events which I told you,
that is the 4 events: absorption of light energy by the chlorophyll, light energy into chemical energy, splitting of water, and reduction of carbon dioxide. They may not take place one above the other. Then how it happens? During the night time, these xerophytes take up the carbon dioxide, and this carbon dioxide gets converted into an intermediate substance. This intermediate substance, during the daytime, when the light is present, they intermediate in presence of light, convert the carbon dioxide into glucose. This occurs in xerophytes. So in xerophytes, the uptake of carbon dioxide by the plant is during the night, and the synthesis of glucose is during the day. Whereas in other plants, the absorption of carbon dioxide and the synthesis of glucose takes place during the daytime only. नाइट टाइम में ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हो सकती. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि वाई द ग्लूकोज कैन नॉट बी फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट टाइम, द सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज फॉर synthesis of glucose the light energy is required, solar energy is required, radiant energy is required, and that solar energy is not available during the night time. That is the reason. Okay, now this is photosynthesis. Now in your book certain diagrams are given. I think I'll be explaining you those diagrams from the book only. Like this is a diagram which is given in your book. This is a leaf. This is a part of the leaf. Now inside the leaf, all of you must have seen small veins are there. एक लाइन सी होती है, मेजर लाइन होती है. लीफ के अंदर एक मेजर लाइन होती है. Okay, actually all these small lines which are found in the leaves, किसी भी leaves में जो lines है, they are known as the veins. The lines are known as the veins. Major line, one major line which is present into the middle of the leaf, that is known as a midrib. So what is the midrib of the leaf? One big vein, because all the lines are known as veins. One big vein which is present in the middle of the leaf is known as a midrib. Then small lines which are there, they are known as the veins. This green part of the leaf, that is known as a leaf lamina of the leaf or the leaf blade. ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है because ये चीज़ें subsequently हर क्लास में भी आएंगी. So in the leaf, if we see the structure of the leaf, there is a midrib, there are many veins, and there is a lamina or the leaf blade, and the leaf blade is green in color. Now if we cut the section of this leaf blade, अगर हम लीफ ब्लेड का सेक्शन काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यू विल फाइंड दैट दिस लीफ ब्लेड इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ऊपर भी है नीचे भी है. तुमने लीफ देखा होगा, लीफ के 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. सो ऊपर वाले सरफेस को अपर एपिडर्मिस कहते हैं. द सरफेस ऑफ द लीफ, ऊपर वाला जो सरफेस है, दैट इज़ नोन एज एन अपर एपिडर्मिस, और लीफ के जो नीचे वाला जो सरफेस है, दैट इज़ नोन एज ए लोअर एपिडर्मिस. सो इफ़ वी कट द सेक्शन ऑफ द लीफ, there is an upper epidermis and there is a lower epidermis. Between the upper epidermis and the lower epidermis, upper epidermis और lower epidermis के बीच वाला जो एरिया है, it contains many cells. So बहुत से cells हैं, देखो बहुत से cells हैं. Now the cells which are towards the upper epidermis, ये बड़े बड़े जो cells हैं ना, जो elongated cells हैं, okay, they are present just below the upper epidermis. ये भी तुम्हें याद रखना है. The elongated cells, this is one cell, this is another cell, this is another cell. The elongated cells which are present below the upper epidermis, they contain many green structures. ये दिख रही हैं, green structures हैं. They are green structures. What are these green structures? This is a cell. Any
structure which is present in the cytoplasm of the cell. Yesterday we talked about that is known as a cell organelle. So this green structure which you see, these are chloroplast. So what is chloroplast? Chloroplast is a cell organelle which is present in the leaf cells of the leaf. And in this chloroplast के अंदर क्या present है? The chlorophyll is present. We talked about that the chlorophyll is essential for photosynthesis. Then what is the location of the chlorophyll? Chlorophyll कहाँ present होती है? Chlorophyll is present in the chloroplast, and the chloroplast, what are they? They are cell organelles. They are present in the cell of the leaf. और अगर मैं पूछूँ ये बीच में क्या दिख रहा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये बीच में जो blank space है, this is a vacuole, because you must have learnt in 9th standard that the plant cells, they have a big vacuole. Okay, now नीचे के जो cells हैं, the cells which are towards the lower epidermis, they are not elongated but they are round in structure and they contain many air spaces. यहाँ air space बहुत कम है, जबकि इनमें बीच में air spaces are very big. Okay, now another thing you must know here is that upper epidermis as well as the lower epidermis. Upper epidermis, which is a single layered cell, एक ही सेल की लेयर है, इनमें छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ये ओपनिंग है, देखो यहाँ पे ये सेल जो है ये एब्सेंट है. सो there are many small openings which are present on the upper epidermis as well as on the lower epidermis, and these openings are known as stomata. यहाँ लिखा नहीं हुआ but ये मैं तुम्हें subsequently बताऊंगी. These are known as the stomata. So this opening जो है, what is stomata? It is an opening which is known as a stomata, and this stomata जो है, on its side, on the side of the stomata, two small cells are there, 1 and 2. These cells which surround the stomata, they are known as the guard cell. So how many guard cells are there? 2 guard cells. What is the function of these guard cells? That I'll be discussing later on. इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताती हूँ. But here you have to remember the upper epidermis or lower epidermis में there are small openings are there, and these openings are known as the stomata. Each stomata is surrounded by 2 cells. Those cells which surround the stomata, they are known as the guard cell. So I hope ये डायग्राम तुम्हारा जो बुक में दिया हुआ है ये क्लियर हो गया होगा. Okay, now let us talk about certain activities which are given in your book. बहुत सी तुम्हारी बुक में एक्टिविटी दी हुई हैं. So we will be talking about all these activities. Okay, now as per my knowledge, these activities, they are not taught in your tuition classes. अगर तुम ट्यूशन क्लासेस में जाते हो तो ये टीचर इन एक्टिविटीज़ को बताता ही नहीं है. वो कहता है कि ये तो एक्टिविटी इतनी इम्पॉर्टेंट है ही नहीं है. बट these activities are very important and any question can be asked from these activities. So first activity which I'll be telling you is how you can say that the chlorophyll is important, or it is essential, not important, it is essential. Chlorophyll is essential for photosynthesis. So how we can demonstrate, how we can see, how can we do some experiment, and those experiment tells us that without chlorophyll photosynthesis cannot take place. So this is the first activity. तो इस एक्टिविटी में तुम्हें क्या करने हैं, एक लीफ लेना है. टेक 1 लीफ. वो जो लीफ लेना है वो कोई भी लीफ नहीं ले लेना. यू हैव टू टेक अ लीफ विच हैज़ द लीफ विच इज़ वेरीगेटेड लीफ. नाउ तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि वेरीगेटेड लीफ क्या होता है. वेरीगेटेड लीफ इज़ अ लीफ. The whole leaf is not green in color. The whole leaf in this is not green in color. There are certain spaces in which certain white portions are there.
लाइक आई हैव टेकन सम फोटोग्राफ्स फ्रॉम द लीफ. वो जो तुम्हारे बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. कौन से प्लांट है जिनकी लीव्स आर वेरीगेटेड? वन प्लांट इज मनी प्लांट. मनी प्लांट, द लीव्स ऑफ मनी प्लांट आर वेरीगेटेड. ये कौन सा है? देखो, दिस इज़ मनी प्लांट. ये जो है ये मनी प्लांट है. ये दिस फोटोग्राफ I have taken from my home only. This is a money plant. You can see this leaf. This leaf, the whole leaf is not green in color. There are various places in this leaf. यहाँ पे हर लीफ में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो वाइट कलर की हैं. So these white color spaces, why they are white in color? They are not green, they are white. Why? Because there the chlorophyll is absent. Because here the in white color the chlorophyll is absent. So this is one plant, that is a money plant, which have a variegated leaf. Another plant which is given in your book, that is croton. Croton plant जो है it also have the variegated leaf. अब croton plant कैसा है दिखता है? ये है croton plant. ये भी I have taken the photograph मेरे घर से लिए. This is a croton, and if you see a large portion of the leaf, so ये देखो, ये बहुत सी जगह ऐसी हैं जिसमें वाइट कलर है और किसी किसी जगह में ग्रीन कलर है. सो इफ़ द लीफ ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट के अगर लीफ में वाइट कलर भी हो और ग्रीन कलर भी हो, दोज आर नोन एज द वेरीगेटेड लीफ. सो for the experiment, to show that the chlorophyll is essential for photosynthesis, you have to take one leaf from a plant which is variegated leaf. So suppose this is a leaf which is variegated, and before you start doing the experiment, जो white color है, you make a sketch of that leaf. उस leaf का एक sketch बना दो जिसमें white color कौन कौन चीज़ की जगह है. Let us see कि उस leaf में ये वाली 5 स्पेसीज ऐसी हैं जिसमें वाइट कलर है. ओके, सो यू टेक दिस लीफ. आफ्टर टेकिंग दिस लीफ, यू बॉयल दिस लीफ इन वाटर, बॉइलिंग वाटर. इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दो फॉर अराउंड 5 मिनट्स. बट बिफोर यू पुट दिस लीफ विल हैव द स्टार्च. दिस लीफ विल हैव द स्टार्च. नाउ व्हाट इज द स्टार्च? I told you that during photosynthesis the glucose is formed. After photosynthesis glucose is formed. This glucose can be consumed immediately by the plants, but the surplus glucose, जो surplus food material है in the plant, that gets stored. So surplus glucose in the plants gets stored in the form of starch. Remember this is a very important, that the surplus food material in plants gets stored as what? The surplus glucose of the plant gets stored as starch. But in animal it is not the case. Animal में, suppose we talk about animals like human beings. In animals, when we take the food, the surplus food, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड है, दैट अगेन गेट स्टोर्ड, बट नॉट एज ए स्टार्च, एज अ ग्लाइकोजन. सो रिमेंबर दीज 2 थिंग्स. इन एनिमल द सरप्लस फूड गेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, whereas in plants the surplus food material get stored as starch. So naturally this leaf, okay, it is doing the photosynthesis because the green color is there, so starch is present there. So first thing you have to remove the starch. अब ये starch कैसे remove करेंगे? वो जो plant है उसको हम डार्क में रख देंगे 3 दिन के लिए. For 3 days that plant from which we have to take one leaf, that is kept in the dark for 3 days. And you know डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो जितना भी स्टार्च होगा इस लीफ में, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, बिकॉज द स्टोर्ड फूड मटेरियल है. तो वो कब काम आता है? जब हमें फूड की ज़रूरत होती है. तो जब इस प्लांट को 3 दिन के लिए हम डार्क में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो बट दैट प्लांट विल नॉट डाई.
वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट जो है, इट विल गेट इट्स फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टोर्ड फूड मटेरियल दैट इज़ विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च, राइट। आफ्टर 3 days कंप्लीट स्टार्च जो है लीफ के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो पॉटेड प्लांट को 6 days के लिए तुम लाइट में रख दो। पहले वो लाइट में था, 3 दिन के लिए तुमने अंदर रख दिया, ताकि जितना भी प्लांट के लीफ के अंदर या जितना भी प्लांट में स्टार्च इज स्टोर्ड दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। देन टेक आउट दैट प्लांट एंड कीप दैट प्लांट फॉर 6 days in the sun, okay, so that the photosynthesis will take place. These are not days, these will be hours. So 3 hours and 4 hours, 6 hours के लिए उसको धूप में रखो, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। आफ्टर दैट यू टेक दिस 1 leaf एंड बॉयल दैट इन वाटर। सो आई रिपीट हाउ यू हैव टू डू। टेक अ प्लांट विच हैव अ वेरीगेटेड लीफ, वो प्लांट ले लो जिसकी लीव्स वेरीगेटेड हों। तुम्हें मालूम है वेरीगेटेड लीफ का मतलब, अभी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उस प्लांट को तुम 3 घंटे के लिए डार्क में रख दो। क्यों डार्क में रखोगे, ताकि उस प्लांट के अंदर जितना भी फूड स्टोर्ड है दैट फूड शुड बी कंज्यूम्ड। वो 3 hours के बाद उस प्लांट को तुम 6 hours के लिए उसको कहाँ रखो, धूप में रखो, ओके। एक्चुअली दिस विल बी द 3 days and these will be 6 hours. So I'll again tell you, take a plant which have a variegated leaves, keep that plant for 3 days in the dark, 3 days in the dark. उसके बाद इसको निकाल के for 6 hours put it in light, sunlight. So sunlight में जब वो जाएगा, ये डार्क में हमने क्यों रखा, ताकि स्टार्च कंज्यूम हो जाए। लाइट में हमने क्यों रखा, ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। जब ये फोटोसिंथेसिस हो गया तो उसका एक लीफ ले लो, टेक 1 leaf, ओके। सो लेट अस से दिस इज़ अ लीफ, देन उस लीफ में वेयर एवर द वाइट स्पॉट्स आर देयर, ड्रॉ दोज वाइट स्पॉट्स। सो ये एक तुमने ड्राइंग कर ली लीफ की। आफ्टर दिस बॉयल दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर, इसको बॉइलिंग वाटर में तुम बॉयल कर दो फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े से मिनट के लिए इसको बॉइलिंग वाटर में बॉयल कर दो। इसके बाद ये लीफ को बॉइलिंग वाटर से निकाल के इसको बॉइलिंग अल्कोहल में डालो, बॉइलिंग अल्कोहल में डालो। नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि बॉइलिंग अल्कोहल में हम तो अल्कोहल को कैसे बॉयल कर सकते हैं। डायरेक्ट अल्कोहल शुड नॉट बी बॉइल्ड, देयर इज़ ए वाटर बाथ। लेबॉर्ट्री में ये एक वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ मीन्स देयर इज़ ए कंटेनर, उस कंटेनर में पानी होता है और इलेक्ट्रिसिटी से इस पानी को तुम बॉयल कर सकते हो। सो बॉयल द वाटर इन द वाटर बाथ एंड कीप अ बीकर containing alcohol with the leaf in that boiling water. Please see, you cannot directly boil the alcohol. You put the alcohol containing leaf in the boiling water of the water bath. Okay, that is also known as an incubator. उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको वाटर बाथ में रखो एंड उसके बाद उसको निकाल के बाद में इसको निकाल लो और एक्सेस ऑफ जो वाटर अल्कोहल है वो निकाल दो, लीफ को निकाल लो। यू विल फाइंड कि बॉइलिंग अल्कोहल में जो लीफ का कलर है वो चेंज हो जाएगा। पहले लीफ का कलर आधी कहीं कहीं ग्रीन था, कहीं कहीं वाइट था, अब वो टोटल वाइट हो जाएगा, सो व्हाट हैपन, व्हाई वी आर कीपिंग द लीफ इन अ बॉइलिंग अल्कोहल, बिकॉज क्लोरोफिल जो है it is soluble in alcohol, क्लोरोफिल इज soluble in alcohol। तो बॉइलिंग अल्कोहल में क्लोरोफिल जो है वो उसमें से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, लीफ में से निकल जाएगी। जब क्लोरोफिल लीफ से निकल जाएगी तो लीफ क्या हो जाएगा, टोटल वाइट हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये वाला टोटल वाइट जो लीफ है
इसको डू अ टेस्ट विच इज़ नोन एज ए आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट. नो व्हाट इज़ दिस आयोडीन टेस्ट? ये तुम्हें हर क्लास तक पता होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट इज़ अ टेस्ट विच इज़ यूज टू सी, विच इज़ डन टू सी वेदर द स्टार्च इज़ प्रेजेंट और नॉट. स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर तुम्हें कहीं कोई भी चीज़ है, कोई भी फूड मटेरियल है, उसमें देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो उस चीज़ को तुम आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन में डाल दो. आयोडीन इज़ अवेलेबल इन एनी ऑफ द लेबॉर्ट्री. हमारी जो बायोलॉजी लेबॉर्ट्री है उसमें भी आयोडीन है, हमारी इवन केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में भी आयोडीन है. सो अगर ये लीफ को आयोडीन में डालोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होगी वहाँ वहाँ ब्लू कलर आ जाएगा. ब्लू कलर आ जाएगा. सो इट विल गिव ब्लू कलर. कहाँ कहाँ ब्लू कलर आएगा? जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगी. तो यू विल फाइंड जहाँ ये ग्रीन कलर था वहाँ स्टार्च है, वहाँ वहाँ ब्लू कलर आएगा, वाइट कलर में ब्लू कलर नहीं आएगा. सो इनडायरेक्टली इट इंडिकेट्स दैट वेयर एवर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट द स्टार्च इज देयर. Where the chlorophyll is not present, the starch will not be there. So I think I'll explain this activity again. अगर ये तुम्हें confusing लगती है, पढ़ोगे तो बहुत confusing लगेगी. So to demonstrate that chlorophyll is important for photosynthesis, it is essential for photosynthesis, you have to take a plant which have a variegated leaves. Variegated leaves, I think I explained you nicely what are variegated leaves. Money plant have variegated leaves. The croton also have variegated leaves. So after that you keep that plant which have variegated leaf for 3 days in dark. ये 3 दिन हम इसको डार्क में रखते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि इसके अंदर जितनी भी स्टार्च है वो कंज्यूम हो जाए, स्टार्च कंज्यूम हो जाए. तो अब 3 दिन के बाद प्लांट में स्टार्च तो है ही नहीं, राइट? तो आफ्टर 3 डेज़ ये प्लांट को सनलाइट में रख दो फॉर हाउ मेनी आवर्स? 6 आवर्स. 6 घंटे के बाद उस प्लांट का एक लीफ ले लो, उस लीफ का एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. उस डायग्राम में जहाँ जहाँ वाइट कलर है वो वाला ड्रॉ कर लो और इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दो फ्यू मिनट्स के लिए. बॉइलिंग वाटर में से निकाल के ये बॉइलिंग अल्कोहल में डाल दो. अल्कोहल में हम क्यों डालते हैं? ताकि क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन कलर है, वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा. सो बॉइलिंग वाटर अल्कोहल में द कलर ऑफ द क्लोरोफिल विल चेंज एंड द लीफ विल बिकम टोटल वाइट इन कलर. लीफ विल बिकम टोटल वाइट इन कलर. उसके बाद इस लीफ का टेस्ट करो. कौन सा टेस्ट? आयोडीन टेस्ट करो. ये आयोडीन टेस्ट तुम्हें याद रखना है क्योंकि उसके बाद मैं 3 एक्टिविटी तुम्हें और एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तीनों में ये आयोडीन टेस्ट करना है. सो तीनों में उसको अल्कोहल, बॉइलिंग अल्कोहल में डालना है, तीनों को बॉइलिंग वाटर में डालना है इन ऑल दिस 3 एक्टिविटीज़. सो वाइट कलर के लीफ को आयोडीन टेस्ट करोगे तो जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, पूरा पूरा लीफ वाइट है, बट आयोडीन टेस्ट के बाद तुम देखोगे जहाँ जहाँ ये क्लोरोफिल है, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ वहाँ तो ये ब्लू हो जाएगा, बट यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थी तो यहाँ ये वाइट ही रहेगा. सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज़ इन दीज एरियाज द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट. दैट इज़ वाई इट गिव्स ब्लू कलर विद द स्टार्च. blue color because of presence of starch with the iodine. So this whole experiment indicates that the chlorophyll is essential for photosynthesis. ये activity तुम्हारी book में भी दी हुई है. Okay, so this is one activity which is done to know or to prove that chlorophyll is essential for photosynthesis. Now I told you about some openings which are present in the leaf. Now this is again a diagram which I am showing you from your book only. Now this is an opening. These openings are known as stomata. देखो ये लिखा हुआ है stomatal pore. I told you these pores are there. Now these stomata are present where?
on the upper epidermis as well as on the lower epidermis. And I told you that these stomata, they are surrounded by these cells. These are the two cells. ये देख रहे हो, ये दो सेल हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है. Kidney shaped or the cashew shaped cells are there. These two cells, they are known as the guard cells, and this is a stomatal pore. And गार्ड सेल के अंदर भी ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. सो गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट आर देयर. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस स्टोमेटा? ओपनिंग है, तो लीफ में द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू गो इनसाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने अभी देखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल. सो हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीव्स? Through stomata, because these are pore, large amount of carbon dioxide enter into the leaf, and during the photosynthesis, जब photosynthesis हो जाता है तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. तो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है वो यहाँ से स्टोमेटा से ही बाहर आती है. सो फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा और द स्टोमेटल पोर इज the exchange of gases, the entering of the carbon dioxide and coming out of the oxygen in the plant takes place through this stomatal pore. Now यहाँ पे एक और डायग्राम भी दिया हुआ है. Now यहाँ तुम देख सकते हो कि जो स्टोमेटा है, पोर है, वो क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज है, और यहाँ पे पोर जो है वो ओपन है. ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस गार्ड सेल्स? दिस गार्ड सेल्स, दे, उनका नाम जैसे बताता है, वो गार्ड सेल्स हैं. दैट मीन्स दे कंट्रोल, दे गार्ड, दे कंट्रोल द opening and the closing of stomata. The function of these two guard cells is they regulate, they are responsible for closing of stomata or opening of stomata. कैसे? यहाँ तुम देखो तो गार्ड सेल्स जो है ना वो छोटे से हैं और elongated हैं, वो छोटे हैं और elongated हैं. When there is no water in the guard cell, जब गार्ड सेल के अंदर पानी नहीं होता तो वो श्रिंक हुए होते हैं. So they are present very close to each other. As a result, the pore is closed. Like during night, रात के time, the sun is not there, so पानी जो है वो evaporate नहीं होता, right? So these stomata are closed. तुमने बहुत बार सुना होगा कि during the night time हमें पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए. क्यों? क्योंकि during the night time the oxygen is not released from the plant, leaf of the plant, but what is released? Carbon dioxide is released. Okay, that is the reason we shouldn't sit under the tree during the night time. So we were talking about the guard cells. These guard cells, when they have less amount of water or when they have no water, they are elongated and small in size. So that means they close the stomata. But when the water enters into the guard cell, जब पानी जो है वो गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो दीज गार्ड सेल स्वेल, तो ये बाहर की वॉल जो है बाहर को आती है, अंदर की वॉल भी बाहर को चल जाती है. तो ये गार्ड सेल्स जो हैं ये स्वेल हो जाते हैं, ये इधर स्वेल हो जाता है, ये इधर स्वेल हो जाता है. सो दीज टू गार्ड सेल्स स्वेल. व्हेन दे विल स्वेल? व्हेन द वाटर एंटर्स इनसाइड. दिस इज नोन एज ए टर्जिडिटी ऑफ द सेल. So when the guard cell they swell, they become turgid. When they become turgid, they are responsible for opening of the stomatal pore. So stomatal pore gets open when there is a swelling of the guard cell. When the guard cell will swell, when they will absorb water. So the function of guard cell is to maintain or to cause the closing or opening of the stomata. I think we'll finish here today. Read it carefully. If something is not clear, message me. I will explain that particular topic again in my next lecture. Right, students? Okay. Thank you and bye-bye.